Limiting equilibrium. This question is from 2021 May June. 4.2 is the variant. A particle of mass 12 kg is stationary on a rough plane, inclined at an angle 25 degree to the horizontal. A pulling force of magnitude P Newton acts at an angle 8 degree above the line of greatest slope of the plane. This force is used to keep the particle in equilibrium. The coefficient of friction between the particle and the plane is 0.3. This is the value of mu. Find the greatest possible value of P. First of all, we sketch the inclined plane. Now the plane is rough. Plane is rough and mass is 12 kg, 25-degree angle to the horizontal, 8-degree angle of the pulling force above a line of greatest slope of the plane. This force is used to keep the particle in equilibrium. The coefficient of friction is 0.3. Find the greatest possible value of P. So first of all, we sketch the inclined plane. This is the inclined plane. This angle is 25 degree. Inclined plane makes an angle 25 degree with the horizontal. And the particle, this is a particle of mass 12 kg. Mass of the particle is 12 kg. Now the force is P. This is the force. This force is P, making an angle 8 degree above a line of greatest slope. This is the angle. This angle is 8 degree. Mass of the particle is 12 kg and the value of mu is 0.3. इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक रेशो होती है. Now other forces, this force P keep the particle stationary on a rough plane. Inclined plane जो है this is rough, so there will be a frictional force acting in the opposite direction of the movement of the particle. So other forces, the weight of the particle acting vertically downward. This is the weight mg. M is 12. तो यहाँ आप 12 g लिख सकते हैं. 12 g. Now we will resolve these forces. Resolving, first we resolve this force P acting on this particle. This is the component along the plane, or this component is perpendicular to the plane. So this component will be P sine 8 degree, or this component will be P cos 8 degree. Or in the same way we resolve this weight, one component along the plane, inclined plane, and the second component will be perpendicular to the plane. This component is perpendicular to the plane, or this component is
along the plane. This angle will be same as this angle. This is same 25 degree. So this component will be this component along the plane is 12 g sine 25 degree. This component will be 12 g cos 25 degree. And since the particle is lying on the surface, so a normal reaction will be perpendicular to the plane. This is the normal reaction. Now we have to find this object is at rest, stationary है. अब हमने पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी फाइंड करनी है. ये फोर्स पी जो है इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में स्टेशनरी रखा हुआ है इसने. अगर हम इस फोर्स को इफ वी इंक्रीज दिस फोर्स द टेंडेंसी टू मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विल बी अपवर्ड. इसने मूव नहीं करना बट टेंडेंसी टू मूवमेंट है, जस्ट टू मूव. दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. If the tendency to movement of the particle is upward, then the friction will be downward. If the tendency to movement of the particle is downward, then the friction will be in the upward. So, but we have to find the greatest possible value of P. देखें अब अगर हम P को इंक्रीज फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास टेंडेंसी टू मूवमेंट अपवर्ड होगी. तो अगर हम इस P फोर्स को थोड़ा सा लूज करेंगे तो टेंडेंसी टू मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल जो है डाउनवर्ड होगी. बट वी हैव टू in which case we get the greatest possible value of P. So if the tendency to movement of the particle is upward, then we can find the greatest possible value of P. So यहाँ पे ये क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में से है. तो नाउ अब हम फाइंड करेंगे नेट फोर्स. तो अदर फोर्स जो है सिंस द टेंडेंसी टू मूवमेंट इज अपवर्ड फॉर ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P, सो the friction will be in opposite direction. This is friction जो होती है वो म्यू आर की इक्वल होती है. म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन. सो नेट फोर्स हमारे पास होगी, दिस इज द केस अपवर्ड मूवमेंट को हम कंसीडर करेंगे. नेट फोर्स विल बी P cos 8 degree. Component of P along the plane P cos 8 degree माइनस म्यू आर. माइनस का साइन इसलिए क्योंकि म्यू आर अपोज करती है फ्रिक्शन. माइनस एम जी, एम इज गिवन दैट इज 12 जी साइन 25 डिग्री. 12 जी साइन 25 degree. This is m. We are using Newton's second law of motion, which is F is equal to ma. But since this is our F is equal to 0 because acceleration is 0 because a particle is stationary. So from here we can find the value of P. Now mu is given, P we have to find. But what will be R? Look at this. Now we will find the sum of the forces acting perpendicular to the plane. वो हमारे पास है P sin 8 प्लस R माइनस 12 G cos 25 डिग्री. तो वहां से हम R फाइंड कर लेंगे. टू फाइंड R प्लस P sin 8 डिग्री इज इक्वल टू, ये दो फोर्सेस अपवर्ड हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन है डाउनवर्ड. एम जी 12 जी कॉस
25. 12g cos 25 degree. From here we can find R. R will be equal to 12g cos 25 degree minus P sin 8 degree. तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 12g की वैल्यू जो होती है वो 10 होती है। cos 25 माइनस पी साइन 8 डिग्री कैलकुलेटर से हम लेंगे तो दिस विल बिकम r इज इक्वल टू 108.76 माइनस साइन 8 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.139 p। नो p cos p cos 8 degree minus mu is 0.3. Now r just we have find this is r 108.76 minus 0.139 p minus 12g sin 25 degree, that become minus 12g sin 25 degree. After calculation we get 50.7 is equal to 0. Now further simplify 0.3 को multiply कर देंगे, we will get p cos 8 degree minus 32.628। यहाँ पे आपने राउंड ऑफ नहीं करना क्योंकि ड्यूरिंग द वर्किंग राउंडिंग आपने नहीं करनी ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। प्लस 0.0417 p minus 50.7 is equal to 0. So from here we will collect the like terms. ये टर्म भी हमारे पास P में और ये भी P में, और इनको हम कलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा P cos 8 डिग्री प्लस 0.0417 P माइनस इस टर्म को और इस टर्म को हम इनको ऐड करेंगे तो वी गेट minus 83.33 is equal to 0. So adding these two तो p कॉमन ले ले, जो this will become 0.99 p नहीं, p cos 8 degree that becomes 0.99 p plus 0.0417 p minus 83.33 is equal to 0. Now adding the p terms, this will become 1.0317 p is equal to 83.33. From here we can find the value of p is equal to 80.8 Newton. This is the greatest possible value of p. So this question is of limiting equilibrium.